اپنے بندے پر, اپنے عبد پر نازل کیا. کتاب نازل عبدیت. عبد عربی زبان میں علماء فرماتے ہیں عبد کہتے ہیں اس مٹی کو. Have you ever seen if you walk on a pathway slowly and gradually what happens is that first of all if you're constantly walking over a path, first of all the grass on top of that path goes away, right? Then the grass completely goes away. You know, you can see this in Pakistan all the time, right? یہاں تو انہوں نے فٹ پاتھ بنا دی مٹی کے, وہ اس کے سیمنٹ کے فٹ پاتھ بنا دی. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, ہمارے یہاں سلسلہ ہے, ٹھیک ہے. گاؤں گوٹھوں کے اندر سیمنٹ کی فٹ پاتھ نہیں بنتے, پگ ڈنڈی ہوتی ہے جس کو which we call pathway, so you walk on it and you're constantly walking on it, the grass on top of it goes away, then the earth and the clay beneath it starts going soft and soft and soft and is at its softest. If you pick it up it's like silk, it's actually like silk. In Arabic language it is called abd. So Allah Rabbul Izzat says his abd is who is agreeing to the commandments of Allah, following Allah's way of life, no matter what is coming in his way, is just doing as Allah says, and in doing that has become as soft as silk. So as soft as what was the quality of Sahaba? As Iqbal once said, Dr. Iqbal once said, ہلکا یاران تو بریشم کی طرح نہ. When we're sitting together, they're sitting together amongst each other. بریشم کی طرح نہ. When ہلکا یاران, he was actually explaining this ayat of Quran. ہلکا یاران تو بریشم کی طرح نرم. رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ نہیں کہ آپس میں تو لڑائیاں کر رہے ہیں اور جب ان کے گھروں کے سامنے آتے ہیں تو ہی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اس کے اپوزٹ تھے. ٹھیک ہے, آپس میں ایک دوسرے پر کرم کرنے والے تھے, رحم کرنے والے تھے, پیار کرنے والے تھے, اور کفر کے اگینسٹ کھڑے رہتے تھے. حضرت عمر فاروق کو فاروق کس بنیاد پہ کہا گیا؟ جو ہم کہتے ہیں فاروق اعظم, وہ فاروق کا کیا مطلب ہے؟ اشد من اللہ ارحم امتی بامتی ابو بکر. اللہ کریم نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ اگر رحم کیا کسی نے تو کس نے کیا؟ ابو بکر نے کیا. لیکن جہاں اللہ کی بات آئی, اللہ کے معاملے میں سب سے سخت کون ہے؟ عمر. کفر اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے سب سے زیادہ عمر ہے. تو اس بنیاد پر ان کا نام فاروق پڑے گا, اور ہم بڑی تعریف میں کہتے ہیں فاروق اعظم. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلوب کیا ہے, what is expected. آپ اس کو کہتے ہیں ریشم کی طرح نرم, ایک دوسرے کے ساتھ ریشم کی طرح نرم, پیار محبت. لیکن جہاں اللہ کے حکم کی باری آئی تو جب ریشم کو توڑنے کی کوشش کرو تو ریشم ٹوٹتی نہیں ہے. تو اللہ کے امر میں سختی, اللہ کے امر کے اندر نہیں ہلنا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے اللہ کے امر کو پورا کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو دین اسلام پر چل نہیں رہے اسے نفرت شروع کر دیں. نہیں, بالکل بھی نہیں. جتنا تقویٰ ہے نا, جتنا بھی تقویٰ ہے, the entire taqwa is for me. The taqwa is not for everybody else. The entire taqwa is for me. میں سیدھا ہو کے چلوں, جتنی سختی اپنے پر لے کر آنی ہے وہ میں لے کر آؤں اپنے اوپر. لوگوں کے ساتھ تو نرمی, پیار, وہ ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نہ, پیار سے, محبت سے. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, فکر نہیں, چلتے ہو. میرے جو 5 سال گزرے, 97 میں پہلا سا روزہ لگا. First روزہ was in 97, and then I went for 4 months in 2001 and finished my 4 months in 2002. These 5 months, if people would have been strict with me, you think I would have gone even a step further? I couldn't have. The people around me were the sweetest of people that one can imagine. کوئی نہیں تھا brother بھائی جنید, it doesn't matter brother جنید, mashallah, wow, beautiful, wow, you look so nice, you look so nice. I had a little beard, I started keeping very little beard on my face, very little. Oh mashallah, oh you look so handsome, you look so nice. Really? So I said, if I'm really looking so handsome, I might as well just keep it. You look so nice, you look so. Then I didn't like it, I got it. کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پھر اللہ موقع دے گا. لیکن آپ ہمارے ساتھ چلتے رہو, جڑتے رہو, مسجد آتے رہو. Keep coming to the masjid. Don't stop coming to the masjid, because masjid is where humans are converted into humans. Masjid is where humans are converted into humans.
where humanity is inducted. इंसानों के बनने की जगह सिर्फ मस्जिद है, इंसानों के बनने की जगह और कोई नहीं है. आपने देखा है, ये भी अपने लोगों को बनाते हैं, ये भी अपने लोगों को बनाते हैं. अकेडमीज बनाई हुई है, इनकी अकेडमी होती है, क्योंकि ये जानते हैं जिस तरह हमने एक बंदे को जैसा बनाना है उसके लिए अकेडमी है. तो बादशाह का बेटा है, वो भी अकेडमी आएगा. कॉन्वेंट्स हैं जी, जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट है. हमने अपनी लड़की को जैसा बनाना है उसको कॉन्वेंट आना पड़ेगा. मुसलमान को जैसा बनना है उसको मस्जिद आना पड़ेगा. मस्जिद नहीं आएगा तो वो कुछ और बन जाएगा जी, आधा दिन तक आधा पटेल बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा. ठीक है, तो मस्जिद is where humans are made. That is the reason why the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whomever you see going to the masjid, give guarantee that he is a man of faith. The one whom you see going to the masjid, give guarantee that he is a man of faith. नमाज पढ़ने वाले के बारे में नहीं कहा, रोजा रखने वाले के बारे में नहीं कहा, हज करने वाले के बारे में नहीं कहा. इनके लिए तो ऐन मुमकिन है कि ये मस्जिद आना बंद करें तो इनकी सफाई हो जाए, नमाज ही जाए जिंदगी से. जो मस्जिद नहीं आता है ऐन मुमकिन है कुरान ही क्या जिंदगी से, कुरान ही पड़ेगा थोड़े अरसे के बाद. जो मस्जिद नहीं आ रहा थोड़े अरसे बाद नमाज भी जाएगी, चाहे कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो. 80 साल का भी है उसको मस्जिद आना पड़ेगा, चाहे घिसट के जाए. नहीं आएगा नमाज जाएगी जिंदगी से. मस्जिद नहीं आएगा सच निकल जाएगा जिंदगी से. मस्जिद नहीं आएगा ईमानदारी निकल जाएगी जिंदगी से. मस्जिद के माहौल में नहीं आएंगी तो चेहरे का पर्दा खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर. मस्जिद के माहौल में नहीं बैठेंगी, मस्जिद या मस्जिद का माहौल औरतों के लिए जहां तालीम वगैरह होती है, जहां ये जमा होती है, जहां अल्लाह की बात सुनती है, नहीं आएंगी तो बेटी को इस बात का एहसास खत्म हो जाएगा कि ये माँ है. मैं तो बड़ी हो गई हूं, मैं भी अकल आ गई है, मैं तो 24 साल की हो गई हूं. दिखा तो क्या पुराने वक्तों की औरत. मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं. 48 साल मेरी उम्र हो गई, 48 साल. मेरा अब्बा मेरे से एग्जैक्टली 26 साल बड़े. मेरा अब्बा मेरे से 25 या 26 साल बड़े. उनकी थोड़ी सी कमर भी झुक गई है, 72-73 साल उनकी उम्र. मुझे मोहित जमील साहब ने जब उनकी माँ का या वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे एक बात जरूर ध्यान रखना हमेशा. जब माँ बाप को देखो अपने आप को ये कहना हमेशा, इतने ही बड़े अक्लमंद क्यों नहीं हो गए, इतने ही बड़े पैसे वाले क्यों नहीं हो गए, इतने ही बड़े मालदार क्यों ना हो गए, अगर ये दुनिया में ना आते तो तू दुनिया में ना आता. इनकी वजह से तू आज खड़ा है. मेरा कभी कभार मैं समझता मेरी कम अकली कभी कभार ऐसे गुस्से हो जाते हैं. जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए. मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. जज़ाकल्लाहु खैर.